स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए पॉडकास्ट के अंदर। आज है हमारे साथ डॉक्टर अभिलाषा who is a specialist in gynecology and obstetrics. Also, she has experience of 10 years in the field of laparoscopic surgeries, IVF and many more. तो डेफिनेटली आज के समय के अंदर जब प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग इतने सारे क्वेश्चन और डाउट्स हमारे माइंड में होते हैं, डॉक्टर अभिलाषा इज़ बेस्ट विच वी हैड फॉर यू। तो आज उनका पूरा टाइम है हमारे पास। आज आपके पास 20-30 मिनट्स वो रहेंगे, आपके सारे डाउट्स का वो आंसर करेंगे एंड आई होप कि आपको मज़ा आए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। Thank you so much, Gautam. Thank you for your kind words, and it's a pleasure being here with you. And I would definitely like to share whatever little knowledge I have in this field. No, you have lots of knowledge because मैं इन्हें तब से जानता हूँ जब से 2 से 3 साल पहले we started training together and उस ट्रेनिंग के अंदर she was the most dedicated because कभी भी वो हॉलीडे अगर मेरा भी होता था लेकिन इनका नहीं होता था। Second thing, she was actually lifting lot of weight। उनकी अगर कंपैरेटिव में हमारे पास 2-3 वुमेन्स थी, लेकिन इनका जो वेट कैटेगरी थी उनके हिसाब से उनकी लिफ्टिंग बहुत सही थी रियली। एंड आई वाज गिविंग एक्चुअली रेफरेंस टू ऑल ऑफ देम कि बी लाइक हर। And whenever I also meet other people who are inclined into fitness, I just give your reference because I have also trained with a lot of people, but the kind of knowledge and motivation you have given me, I have never experienced it, and it is like a very cherished memory for me also. Thank you so much. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि भाई व्हेन डिड यू फील कि भाई आपको MBBS करने के बाद स्पेशली इस फील्ड में आना है, गायनेकोलॉजी फील्ड के अंदर। बेसिकली एक स्टीरियोटाइप होता है कि विमेन है तो गायनेकोलॉजी में जाएगी, बट एक्चुअली आपके माइंड में कुछ था कि भाई हाँ ये फील्ड मुझे बहुत पसंद है? जी हाँ, एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, even my cousins, we are all somewhere or the other associated with this profession of medicine. Okay. To start with, my mother is a gynecologist, and I grew up seeing her and the faith and the love her patients show towards her. Then when I was doing MBBS, I saw that this is gynecology, not exactly gynecology, but obstetrics, means pregnancy and the related stuff. That is more like a happy medicine. Okay. Pregnancy is not a disease. Okay. Yes, yes, definitely. It's I think most cherishable thing. Most cherishable thing, and for a woman, it is the most memorable journey of her life when she goes through pregnancy and becomes a mother. Right. So it is the most beautiful memory of every woman's life, and to be a part of that journey and then to bring a new life into the world, it is a beautiful feeling. So actually एक बीच में क्वेश्चन, अगर आपको जब भी आप कोई बच्चे को जन्म देते हैं, बेसिकली यू हेल्प अ मदर, तो एट दैट टाइम क्या फील होता है जब आप उसे फील करते हैं, टच करते हैं? It's been 10 years that I am doing this, but still whenever I hold a newborn baby, when I deliver a baby and it cries for the first time, the feeling is something I cannot describe. This happiness is something, and the mother who is in a lot of pain, उनके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं व्हेन दे हियर देयर बेबीज क्राई, यू नो। ऐसा मानते हैं कि मैंने कई बार पढ़ा भी है कि प्रेगनेंसी का जो पेन होता है, लेबर पेन, दैट इज 10 times हायर देन एनी अदर पेन, एनी एक्सक्रूशियल पेन इन द वर्ल्ड। तो उसके बारे में कुछ बताइए। इट इज़ वेरी ट्रू एंड शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है एटलीस्ट 6 to 8 hours, मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पेन टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, अ मदर हैज टू गो थ्रू दैट pain which is going on increasing in the period of 6 to 8 hours. It is a huge pain. I mean, it is not compared to any other pain, definitely. ऐसा बोलते हैं theoretically कि उस time पर if you even cut the body, means you give some cut to the body, the pain is so excruciating that even the cut will not be felt by the mother. Okay. So the pain मतलब उसका level ही इतना होता है कि बहुत severe होता है. Right. It is very severe. नहीं, definitely. Yes, but now because the things have advanced, so now we have painless deliveries in which the mother will not feel so much of pain for that she has to go through otherwise in the normal delivery, but still some mothers opt to go for the natural process. They don't want even the pain to be subsided, and I think
we should appreciate that for all the women who go through all this. सेकंड क्वेश्चन ये है एक बार कि भाई व्हाट आर ट्राइमेस्टर्स, बिकॉज मैंने देखा है कई लोगों को ट्राइमेस्टर ही नहीं पता होते या कितनी वीक्स की प्रेगनेंसी होती है वही नहीं पता होते. कई यंग पेरेंट्स भी होते हैं जिनको इनका नॉलेज ही नहीं होता. तो बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग ट्राइमेस्टर क्या करना है उनको कुछ नॉलेज नहीं है. तो उनके बारे में थोड़ा अगर हाईलाइट करें तो हमारे यूज़र को वो पता चले. Yes, definitely. Pregnancy, as we all know, human pregnancy is of 9 months. तो ट्राइमेस्टर बेसिकली लिटरल मीनिंग होता है 3 months का पीरियड. सो प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 months, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द मिडिल 3 months एंड द लास्ट ट्राइमेस्टर आर द लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी. सो जो अगर मैं मेडिकली आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है दैट मीन्स द पीरियड ऑफ 0 to 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी. दैट इज अ पीरियड ऑफ सेल्फ डिफ्रेंसिएशन, मीन्स उस टाइम पे बेबी का ऑर्गन्स वगैरह बन रहे होते हैं. देन सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो होता है जिसमें एक रैपिड ग्रोथ होता है, उसमें बेबी का साइज बढ़ता है, यू नो द ऑर्गन्स का साइज बढ़ता है. एंड देन द थर्ड ट्राइमेस्टर इज ऑफ मैचुरेशन, मीन्स ब्रेन मैच्योर होता है, ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड. मैंने सुना है कि भाई फर्स्ट एंड थर्ड टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट ज़्यादा होता है वुमेन्स के लिए, ऐसा है? yes it is difficult because when a woman gets pregnant suddenly there is a hormonal changes. And especially when it is the first pregnancy, the body of the woman is not equipped, you know, it is not used to those changes. So we see that वो एक adjustment phase होता है, sudden changes start होते हैं, hormones suddenly rise होना शुरू होते हैं. So many women feel vomiting, they will feel they are very sleepy, they feel constipated, they feel tired all the time, you know, irritable, all, but this is all hormonal. And then after, as the third month finishes, usually all these symptoms subside on their own. सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है उस टाइम पर बेबी का साइज इतना बड़ा नहीं होता है एंड हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो काइंड ऑफ स्टेबल होते हैं. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीमेल्स के लिए काफ़ी यू नो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं. कंपैरेटिवली अ स्मूथ फेस. लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि द बेबी स्टार्ट्स गेनिंग वेट. सो व्हेन द बेबी स्टार्ट्स गेनिंग वेट तो सारे प्रेशर सिम्टम्स जो होते हैं जिसको हम कहते हैं. सो व्हेन दे विल वॉक दे विल फील देयर इज समथिंग, यू नो, प्रेसिंग डाउन. दे विल स्टार्ट हैविंग बैक एक, दे विल स्टार्ट हैविंग पेन इन देयर थाइज एंड ऑल दोज थिंग्स. देन सीधा अगर इफ दे आर lying down straight, because of the pressure they feel they can't breathe. So these are the changes in the last trimester. That is why the second trimester है comparatively smooth होता है and first और third में थोड़े से complications, not exactly complications but problems होते हैं. Yes. वैसे डाइट के बारे में तो हम प्रेगनेंसी का डाइट वगैरह रेकमेंड करते हैं, लेकिन फ्रॉम एक्सपर्ट इट्स कमिंग वेरी डिफरेंट. तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ डाइट की टिप्स, एक या दो डाइट की टिप्स जो आप दे सके, जैसे क्या उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में ध्यान रखना चाहिए? Yes. There is something called as pre-conceptional counseling. Means pre-conceptional का मतलब ये होता है कि जब एक कपल बेबी प्लान कर रहा है तो देर आर सम सप्लीमेंट्स जो हमें उनको प्रोवाइड करने चाहिए बिफोर द कंसेप्शन इज डन, मीन्स बिफोर शी इज प्रेग्नेंट. सो एटलीस्ट 1 month प्रायर देर आर फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे कि बेबी में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं विच वी कॉल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स जब होते हैं. यस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मीन्स जो ऑर्गन फॉर्मेशंस होते हैं बेबी में, दे आर कंप्लीटेड by the end of 3 months. So whatever supplements you are giving, it should be given ideally before she has conceived. Okay, मतलब 1 महीने पहले और बाकी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्स के लिए. तो फॉलिक एसिड, उसके अलावा फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड प्री कंसेप्शनल फेज में फॉलिक एसिड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके. सेकेंडली जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें द मेन थिंग दैट वी रिक्वायर इज आयरन, कैल्शियम एंड सम प्रोटीन सप्लीमेंट, बिकॉज प्रोटीन्स विल हेल्प इन द, यू नो, इट इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. सो बेबी के डेवलपमेंट के लिए यस इट इज इम्पोर्टेंट. एंड एक चीज ये भी है कि आयरन बहुत खाने से कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, तो यू गाइस आल्सो रेकमेंड विटामिन सी, फाइबर रिच फूड. यस, तो वो भी रहेगा. यस, फाइबर रिच फूड एंड फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स लाइक एप्पल and peach,
which are fiber rich. Fiber rich, you should take Yes. it because iron में ये एक side effect आता ही है. So थोड़ा सा और because of the vomiting sensation and all that. तो third trimester में pressure भी create होता है, तो at that time also sometimes कि उनको constipated वो रहते हैं, acidity होती है, तो that will help ना? It will definitely help. Right. So diet का काफ़ी role होता है because the mother also needs sufficient balanced diet for her own well-being plus for the developing baby, so that after pregnancy, after she delivers the baby and after she is breastfeeding, जो भी loss होता है nutrients का through breast milk या whatever the baby is extracting from the mother's body, it should be replaced. Many people they feel that हमें कोई problem नहीं है, हमें कोई issue नहीं है, why should we take medicines during pregnancy? But उसका role यही होता है because the amount that you require एक nutrient, you need more. हाँ, and you can't get all of it through food. Through food, बराबर है. So and because of pregnancy बहुत सारी चीज़ों से aversion हो जाता है. Patient is not able to take so much. So the supplement अगर आप एक कैल्शियम की टैबलेट ले लेते हो, so जो आपका 24 hours का कैल्शियम रिक्वायरमेंट है, that is finished. So diet आप लेना ही चाहिए, but these supplements are important. Plus जो हमारे blood में reserves होते हैं, जैसे कैल्शियम reserves हैं आपके teeth में, bones में. So if you will not take the supplement, those will used. The baby will extract all of them. And you will feel afterwards, after pregnancy, आपको bone loss वगैरह और उसके bony pain start हो जाते हैं. And then after first or second baby, you will see many females who are after the age of 30-35, they start feeling weak. They will start having some joint pain, some bony pain. So this is the reason. So even we also learn in Indian dietetic book when we were studying that in female, especially during pregnancy, we required minimum 1500 mg of calcium. नॉर्मल पर्सन का अगर 500 mg है तो 3 गुना चाहिए मिनिमम. तो डेफिनेटली ये तो रिक्वायर्ड है. एंड दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. फ्रॉम फूड इज नॉट पॉसिबल. कितना लोगे आप? और अगर जैसा डाइटिशियन भी है, जब अगर हम दूध देते हैं या पनीर देते हैं, कर्ड देते हैं, तो उन लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि इतना सब रोज खाना है. It's not possible. It's not possible. तो डेफिनेटली ये तो चाहिए ही. So supplements are very important in pregnancy because it will help the mother not only through pregnancy but even after the birth of the baby. Fine. And एक और क्वेश्चन आता है कि लैक्टेशन जब आप करते हैं, जब आप मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है, उस समय के अंदर कौन सी चीज़ प्रोहिबिट होनी चाहिए, जैसे कि बेबी के लिए जो चीज़ ना अच्छी हो? सी व्हाट हैपेंस इज जो भी मदर कंज्यूम करती है, चाहे वो मेडिसिन्स हो, चाहे वो फूड हो, सो वो सब चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होकर के बेबी तक भी पहुंचती हैं. सो मोस्टली वी हैव टू बी केयरफुल about any substance abuse, alcohol intake, you know, obviously it is even very caffeine will too much of caffeine. 4-5 ग्लास अगर कॉफी पीते हैं आप कप वगैरह में, तो वो दिक्कत देगा. Yes, but too much is should be avoided. But 1 or 2 cups are okay. But majorly कुछ medicines होती हैं जो कि breast milk में secrete होती हैं, जो बच्चे के लिए harmful हो सकती हैं या वो बेबी के ऊपर side effects cause कर सकती हैं. Can you name anyone? Any antibiotics, जैसे there are few antibiotics that will cause loose motion in the baby, and there are few drugs which if they are secreted, they will, because the baby will have to metabolize those medications, and the newborn is not equipped for that. So those should be avoided. But everything has to be done under the consultation of a doctor, because they will know what is क्योंकि जब हमें medicine देना होता है तो we have to weigh the risk versus benefit. Risk benefit ratio. Yes. मेडिकल फील्ड में ये चीज़ होती है, risk versus benefit ratio. हमारे मेडिकल फील्ड में कहते हैं कि first do no harm. You should not harm the patient or the baby. So we have to decide that way. So because what condition the patient will come in, and उसमें अगर हमें उसके लिए थोड़े दिन बेबी को breast feeding बंद भी कराना पड़े, but we need to give some medication to the baby, to the mother. So we should go for that. Okay. And एक चीज़ ये भी है कि मदर का जो मिल्क होता है वो वे प्रोटीन में बहुत रिच होता है जो बेबी को चाहिए. कंपेरेटिवली अगर काव के मिल्क में देखें
तो काउ के मिल्क का वे प्रोटीन केसिन प्रोटीन रेशियो इज डिफरेंट एंड मदर का इज डिफरेंट, इज इट राइट? That is true, but for a newborn, cow milk is very rich in calories, in protein. And for a baby, for a newborn is not equipped, the system of a newborn is not equipped to digest that milk. Okay. So cow milk should be avoided. For 6 months, the baby should be given completely avoided. Only breast milk should be given, just in case because of any problem the mother is not able to breastfeed. Then the formula feeds are available. Right. That should be given. But cow milk is not a substitute to mother's milk. Okay. Yes. तो ये एक अच्छी इंसाइट थी, बिकॉज क्या होता है कई बार मदर जो होती है वो अवेलेबल नहीं है कोई रीज़न की वजह से, या मदर की डेथ हो चुकी है, तो फादर्स या फैमिली को कुछ थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि क्या, वैसे तो उनके डॉक्टर्स बोलते ही है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में तो ये कितना रहेगा कि जो मन में है वही करना है. काउ मिल्क इज द बेस्ट, बट इट इज नॉट फॉर द न्यूबॉर्न्स, डेफिनेटली इट इज नॉट. एक और क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स लिटिल बिट रिस्की कि भाई व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी तो खतरा है कि भाई बेबी वगैरह जो है उनको डैमेज होने का वूम वगैरह में. तो उसमें क्या आपका एक ओपिनियन है? एक्सरसाइज एनकरेज करी जानी चाहिए इन प्रेगनेंसी. देर आर जैसे कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं, सिंपल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, ऑल दीज थिंग्स दे शुड बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट, बट एक्सरसाइजेस शुड बी मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा करें कि भाई लाइंग पोजीशन में कोई एक्सरसाइज ना करवाए, या तो कोई ऐसी पोजीशन जहाँ पे उनको प्रेशर जनरेट हो उनके स्टमक वगैरह में, उनके वूम वगैरह में, एनी हेवी लिफ्टिंग ऑफ वेट्स, यू नो दैट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द एब्डोमेन. बट लाइट वेट अपने मशीन्स वगैरह के साथ कि जहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट ना हो, कंप्लीटली सेफ. योगा एक्सरसाइजेस कीगल्स होती है, जो आजकल तो प्रीनेटल पोस्टनेटल काफी एक्सरसाइज चलती भी है ऑनलाइन. दे शुड गो दोस कैन बी डन. एंड एक्सरसाइज से एक बेनिफिट ये भी मैंने देखा है, आप मुझे बताइए आप कितना सही कितना गलत है, कि भाई एक्सरसाइज करने से वो एक्टिव रहती है, उनके जो आपने कहा बोन जो है वो थोड़े से वीक होना चालू होता है, तो वो थोड़े से स्ट्रेंथनिंग मिलती है उनको, उनके हार्मोन बैलेंस रहते हैं, दे फील लेस क्रैंकी. उनको थोड़ा सा डायबिटीज़ वगैरह में भी कई बार हमने देखा है कि मदर्स वगैरह कभी हो जाता है बिकॉज ऑफ ईटिंग पैटर्न्स, उनके जो घर वाले ठूस ठूस कर देते हैं. yes. तो उतना भी एक बेनिफिट मिलता है. yes. Exercise will have a lot of benefit for the mother and definitely for stress management. जो कि प्रेगनेंसी का जर्नी होता है उसमें many females they feel a lot of stress because of the thing going on in the body. Suddenly there is a weight gain, your body is going out of shape, you are feeling nauseatic, you vomit sometime, you are having constipation. So exercise से जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं वो स्ट्रेस को फाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं. सो डेफिनेटली. एंड ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा कि जो बहुत सारा खिलाते हैं, सो ये भी एक मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि मदर का वेट गेन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेबीज वेट. बराबर. सो इफ यू विल मेक द मदर ईट टू मच कि मदर का वेट बढ़ेगा तो बेबी का भी वेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता. तो मोस्टली कितना वेट बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यूजुअली 8 kg to 11 kg का वेट गेन होता है, दैट इज हेल्दी. बट इट कैन बी अ लिटिल हेवायर, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक अब्रप्ट वेट गेन नहीं होना चाहिए कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month यू आर गेनिंग 5 kg 6 kg. दैट इज अनहेल्दी. यूजुअली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग एंड बिकॉज उस टाइम पे बेबी का ग्रोथ भी बहुत, बेबी इज वेरी स्मॉल, सो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर देयर इज नो वेट गेन. देयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ वेट लॉस ऑल्सो. weight loss also because patient is having vomiting loss of appetite. So उस टाइम पे weight loss भी हो सकता है. second and third में होता है. second and third में 5 kg to 6 kg usually होता है. second में 5 ऐसे kg करके 10-11 kg 10-11 kg is normal, is average weight gain in Indian population. So that much is enough. If you will feed too much to the patient और उनका sudden weight gain होगा तो उनका डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का रिस्क और बढ़ जाता है. With obesity all these risks will increase and it will not help. Obesity भी कंट्रोल होनी चाहिए. हाँ, और अगर बीपी बढ़ जाता है पेशेंट का तो बेबी का ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. So the baby will come out to be weaker. Not the weight will not grow because the mother is eating too much. Doc, by the way, after all this diet exercise,
कि भाई कोई ऐसा एक्सपीरियंस 10 सालों के अंदर आपका हुआ हो जो आपका लिए शायद अच्छा भी हो शायद बुरा भी हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस हो कि भाई आपको लाइफ टाइम याद रहे, तो कुछ शेयर करें अगर। There are many experiences, but one thing over this journey जो मैंने देखा है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, which is a bit heartbreaking, it is the fixation for a male child, Right. जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में आप किसी भी स्ट्राटा में देख लें, चाहे वो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग हों या बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हों, दे हैव अ फिक्सेशन फॉर अ मेल चाइल्ड. You know, if you have 2 daughters, they will not consider that your family is complete. If you have 2 sons, your family is complete. So because you have so many followers and viewers, so I just want to urge everybody that please don't differentiate between a girl and a boy. Because अगर गर्ल एंड बॉय में डिफरेंशिएट करोगे तो वही सोचना चाहिए कि भाई आप लोग कहाँ से आओगे. Exactly. आप लोग भी एक मदर से ही आए हो ना. Yes. तो फीमेल्स आर वेरी इंटीग्रल पार्ट, एंड वो तो डेफिनेटली गलत ही है हमारे सोसाइटी के अंदर. स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के इतने बैंड होने के बाद भी कई सारी जगह पे ऐसा होता होगा. मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि भाई कई सारे स्मॉल क्लिनिक्स वगैरह में कुछ ऐसा करते होंगे. नहीं, मतलब पेशेंट्स दे कम विद दैट मेंटालिटी कि मैडम अभी हमारे पास 2 बेटियां हैं, बट दे विल नॉट से इट क्लियरली और डायरेक्टली, बट मैम वी वांट टू कंप्लीट आवर फैमिली, कैन यू हेल्प. ऐसी कोई सैड स्टोरी आपके साथ हुई है कि जैसे मैंने कई बार सुना है कि भाई फीमेल चाइल्ड होती है तो वो छोड़ के विदाउट नोटिस गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल चले जाते हैं. Yes. That is very sad actually. That is very sad. I was working, I am from Indore basically. Okay. So I was working over there for a short period of time. जस्ट फॉर एक्सपीरियंस इन गायनेक डिपार्टमेंट. तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था. ऑल द पीपल हु कुडंट अफोर्ड द प्राइवेट यू नो फैसिलिटीज़ वो वहाँ पर आते थे. तो देयर वाज अ लेडी, शी was in labor and she delivered a girl child. Okay. And that was her 4th child. Okay. And she had 3 daughters. Okay. And there was a backyard जो फीमेल वार्ड था, उसके पीछे एक स्पेस थी. And she wrapped the baby and she kept the baby over there, and without we have to do a discharge and everything. So वो सब बिना कुछ formalities किए she just left the baby and she went away. Really sad. And it was so sad. And one of the ayas in the hospital who did not have a child, okay, she said that I will officially legally adopt the baby and I will take care of it, because there are people in the world who are struggling to have a healthy normal baby. And when God is blessing you with one, we are so unfortunate that we are not able to appreciate that blessing. Really sad. So and आजकल तो IVF वगैरह का इतना कुछ है जो कंसीव नहीं कर पाते, उनके लिए कितने सारे ट्रीटमेंट्स भी है बहुत. And it is very expensive. Very expensive. And when you see people who come to you who are married for 10 years, 12 years, 20 years, but they are not able to conceive. They have done everything. कोई बाबा के पास गए, कोई you know तीर्थ स्थान पर गए हैं, कोई they have sold their lands and everything just so that they can get one baby in their hands. एक मेरे ख्याल से इसके ऊपर रिसेंट मूवी आया, if you have seen it or not, मिली या Mimi, I guess. Yes, Mimi is the right. Kriti Sanan wala. I haven't exactly seen on the same topic of adoption. Okay. There were 2 foreigners who cannot actually conceive the baby. Okay. But उन्होंने एक actually एक mother, surrogate mother का सहारा लिया, who was Kriti Sanan, name called Mimi. Okay. And when she doctor told that those parents कि आपका बेबी जो है वो इतना हेल्दी नहीं, जैसे आपके फॉलिक एसिड का कहा, ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह ऑर्गन डेवलपमेंट थोड़े से वीक होते हैं, तो दे विल बी एबनॉर्मल. तो जैसे ही पता चला उनको 5वें-6ठे महीने में, तो दे लेफ्ट. नाउ कृति सनन वाज देयर के जो मनी के लिए कर रहे थे, ड्यू टू हिज हर पैशन सरोगेसी, हर पैशन वाज टू बी इन बॉलीवुड. तो उनको पोर्टफोलियो करवाना था एंड उन सारी चीज़ों के लिए. नाउ शी हैज़ कम्प्लीटली चेंज हर फील्ड. उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई बिकॉज सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट दिस. और उन्होंने घर पे एक झूठ बोल के बोला था. तो ये सारी ट्रेजेडी वगैरह एक मूवी में उन्होंने डाली है. दिस वेरी ब्यूटीफुल मूवी. ये सेम कंसेप्ट है. आई थिंक यू शुड सी दैट. ओके, श्योर आई विल. बट डेफिनेटली एक सैड मेंटालिटी तो है. वी शुड डेफिनेटली गो रेज अवर वॉइस टू स्टॉप दिस. और ये सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, कैंपेन्स वगैरह. वैसे हमारे गुजरात में बेटी बचाओ वैसे कैंपेन काफ़ी एक्टिव है. यस.
और उत्तर प्रदेश में भी मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ वगैरह काफ़ी कर रहे हैं. हाँ. It is all over India. It is all over India. अभी it is totally the sex determination जो हम कहते हैं कि before the birth of the baby is totally banned. Totally banned. So, but people find loopholes and they do whatever they want to. But it is. अर्ज के भाई आप ये स्टॉप करें ज़रूर से, because ये बहुत ज़रूरी है in for the human race also, right? Yes. तो after that, moving to lighter question. आपको हाउ यू फाइंड सूरत, बिकॉज मुझे पता है कि हमारी एक बार बात हुई थी ऑन द ट्रेडमिल एट हेवी फिटनेस, जब आप रन कर रहे थे कि भाई सूरत वगैरह जो है वो काफ़ी पीसफुल है, एट द सेम टाइम बोरिंग भी है थोड़ा सा, आपको ऐसा लगा था. बट आपका कहाँ पे बचपन बीता उसके बारे में, और कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या जर्नी आपकी है अभी, सिंस 3-4 years आप यहाँ? Yeah, it's been 3 years. And before Surat, I was in Gorakhpur, UP. Okay. That was my in-laws' place. Okay. And then we planned to shift to Surat. वहाँ के कोई experiences? Because Gorakhpur, you know. Yeah. No, I might upset a few people, so I'll not talk about that. Okay. So yeah, but Surat के बारे में I would definitely say कि my 3 years have been really nice. And मज़ा आता है यहाँ पे, मतलब बहुत. I feel at home. At home. Now in Surat. And right. The people I have met in those 2-3 years, right. they have, some of them have really touched my life and changed it for better. I have found some very good people, very genuine people, and you are definitely one of them. Thank you. So for your viewers, I would like to say that I know Gautam from 2018 and I took personal training from him. And he was so motivating, he was so dedicated, and he has a vision, which I always tell you. Yes. You have a vision कि मुझे आगे क्या करना है, and you have an idea how you should go about it, and that will give you the maximum results. And as a friend, I really feel very proud whatever you have achieved. Thank you, and thank I think you have a long way to go. Thank you so much. So all the best. Thank you so much. अगर लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहे कि भाई आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं सूरत वगैरह में, बिकॉज हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो ऐसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे सूरत से ही, तो यू कैन डेफिनेटली गिव अ बेटर आइडिया. Yes, I am Dr. Abhilasha Sharma. As of now, I am practicing in Shah Hospital. That is in Piplod. It is opposite Bhagyalakshmi Society in Piplod. Okay. And I'm available there. We have a hospital which is 24 hours open, and we have all the facilities. हॉस्पिटल का जो नंबर है रिसेप्शन का वो हम डाल देंगे. If you want to contact there, आप डायरेक्ट वहाँ पे contact करिए. You can consult her. She is one of the best which I know. So definitely. So kind of you. Thank you so much. Definitely. Thank you so much for being here. It's my pleasure. Thank you. We'll hope कि हम ऐसे कुछ आगे और पॉडकास्ट करें. Thank you. Thank you so much.